Yeah, it's actually such a complicated scenario, and everybody who's shared their views agree that जो externally abuse हो रहा होता है वो एक बिल्कुल अलग है, but this is within your house and this is within your home, within the sanctity of the four walls, like जब चादर और चार दीवारी की आप बात करते हैं फलाना धमाका, और उसके अंदर वो बच्ची जो है रेप हो रही है, चाहे वो बाप कर रहा है या भाई कर रहा है, मामा चाचा, इवन दादा का हमने आपको प्रेस क्लिपिंग दिखाई जिसमें दादा ने पोती को रेप किया है। उस पूरे सिनेरियो में हम किस तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं विद अ हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज बात वही आ जाती है ना कि जी ये घर का अंदरूनी मसला है। आई स्टिल रिमेम्बर, दिस इज वे बैक इन 1999 जब मैंने काम शुरू किया था, एंड there was this woman in Islamabad, आशा में नो हर शहनाज बुखारी होती थी जो इनका जो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा लेती थी, एंड शी once called me early morning. She said, Tasneem, इसी वक्त प्लीज ऑफिस आ जाओ. So I went there. So there was this young girl with a kid, and that kid was actually result of a rape by her father. और वहां पे लोग आए हुए थे जो उसको अडॉप्ट करना चाहते थे, तो शनाज वांटेड मी टू बी देयर टू हेल्प सेलेक्ट द राइट पीपल हु कुड अडॉप्ट द चाइल्ड. सो वो एक चीज तो है कि लोग ये नहीं देख रहे थे कि ये बच्चा किस चीज के नतीजे में पैदा हुआ है, बट उनको ये था कि ये बच्चा है, इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं. सो मुझे वो एक चीज जरा सी वे बैक इन 99 की मैं बात कर रही हूँ. अब तो जाहिर है कि थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. काम भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से उस वक्त होता था, बट मेरा सारा जो इस पूरे इशू को उठाने का मकसद था, एंड आई नो कि काफी हमें भी विद द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, हम गायनी फेमिनिज्म पे जब भी हमारा फेसबुक लाइव होता है तो उस पर हमें बड़े कमेंट्स आते हैं और हर तरह की फ्लैग हमें मिलती है, बट दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. मैं ये चाह रही थी आशा, अगेन कमिंग बैक टू यू, और कुछ सवालात आपके लिए भी थे कि ये पूरा हीलिंग प्रोसेस जो है, और जैसे बीगुल ने बात की कि शुड द सर्वाइवर बी ब्लॉकिंग इट और शुड द सर्वाइवर जस्ट let it be there but not as a wound, as something that's been unpleasant but not as a persistent wound. I mean, how would one go about it? Okay, so I think this is a very important point raised, because the thing is, yes, ये कहना जो बीगल का भी बहुत important point था. अक्सर हम generally society में deal करते हैं इसी तरह से कि भाई चुप कर जाओ, भूल जाओ, and we think कि बच्चा या बड़ा कोई भी अगर वो बात नहीं करेगा उसके बारे में तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. शायद जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी. Incest it's not one of them. Rape is not one of them कि हम अगर सोचेंगे नहीं तो वो हमारी consciousness में से गायब हो जाएगा. It will stay there. So and Bigul का एक point जो था कि in some ways it should stay there, in the sense that it is something that has happened. आप उसको accept करेंगे तो you're able to deal with it. When we use the term move on, we don't mean move away. We don't mean कि आप उसको भूल जाएं या उसको significant ना समझें. The idea is to move on in the sense कि वो एक आपकी life का एक significant हिस्सा तो एक रहेगा, लेकिन it does not define you. What happens with cases and traumatic situations like that is कि वो आपकी जिंदगी को डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं. वो आपको टेक ओवर कर लेते हैं आपकी जिंदगी को. जैसे यहाँ पे यसरा ने भी एग्जांपल दिए, बाकी लोग भी अगर बात करते हैं कि हम कई दफा ट्रॉमा को इस तरह से कैरी करते हैं कि वो हमारी रिलेशनशिप्स में भी आएगा, हमारे काम में भी आएगा, हमारी फ्रेंडशिप्स में भी आएगा, हमारी अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस में, हर जगह पे उस ट्रॉमा का एक कॉन्स्टेंट एक रोल और एक शक्ल नजर आती रहेगी. Through therapy, again, I would say हमारे यहाँ पे उस तरह से counselors और therapists who are trained in these particular traumas नहीं हैं. लेकिन through proper therapy, the idea is for you to be able to carry that with you, but not in a way that it defines you. It is there. You might become a stronger person because of it. You might actually get a certain energy. बहुत सारे लोग जो इन issues पे काम करते हैं वो अपने trauma को एक positive energy में convert करते हैं. They heal through it. They work through it. So it's not as though वो उसको भूल रहे हैं. लेकिन it is not defining and taking over every aspect of their life. It is there, it hurts, there will be times कि वो आपको trigger भी करेगा, आपको अपने इर्द गिर्द चीजें भी नजर आएंगी, but it is not the only thing in your life.
So the idea is about actual healing through trauma means कि आपको अपनी जिंदगी as a whole नजर आए, जिसमें it is one part, it is a painful part, but it is not the only part in your life. And I think media के through even primary care therapy, हमने एक जो यहाँ पे चीज mention नहीं की, doctors are extremely important. The primary health sector is extremely important, क्योंकि अक्सर ये जो cases होते हैं वो doctors सबसे पहले identify करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और किसी से बात नहीं कर रहे होते, या मदर्स नहीं कर रही होती, या बच्चे नहीं कर रहे होते, डॉक्टर्स विल पिक इट अप. सो उनकी ट्रेनिंग उनके थ्रू, एंड आई थिंक द मोर वी टॉक अबाउट इट, I feel I see no reason why this is not something like with other issues, rape, child sexual abuse, जिस पे हम अब बात कर रहे हैं, ये उसमें क्यों नहीं शामिल हो सकता. It is more complicated, of course, but at the same time, I do feel कि बात करने से plays बने हैं. यहाँ पे सिला की बात हुई, उडारी एक और play बना था a few years ago, which was also a stepfather who was molesting a girl, and it was quite sensitively handled in also the way in which they had shown it. I feel कि there are ways जिस पे हम जितना ज्यादा इस पे बात करेंगे, sensitively करेंगे, trained लोग करेंगे, उन लोगों को consult करके, involve करके अगर करेंगे, तो I actually am quite hopeful that we can contribute towards that healing process, because healing process दो तरह से होता है. Like I said, trauma is a personal trauma, and then there is a social trauma. Personal trauma तो आप therapy में जाएं अगर, if you're fortunate enough to kind of be able to afford therapy or find a counselor who is experienced in this. फिर एक जो social trauma है, वो इस awareness से heal होता है. When you see people are dealing with it sensitively and showing कि अगर survivors हैं तो उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई, उनको उनके घर वालों को सबको हार्ट अटैक नहीं हो गया, वो खुदकुशी नहीं हो गई, उनकी फोर्थ शादियां हो के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, and you actually show positive resolution through the media is very healing also. Because ultimately हम मीडिया में एक रियलिटी तो दिखाते ही हैं, लेकिन हम उस रियलिटी को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, आई थिंक इज अ वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. And for a trauma survivor, it might be triggering. A lot of things can be triggering, but how you show that resolution really makes a difference. That's very powerful. So I think from a media perspective, I think that's really important. कि बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ बात करना is not going to help. सिर्फ बात करना can damage further. लेकिन किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से रिजॉल्व कैसे कर बात रहे कर हैं रहे इन द हैं मीडिया, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और एंड में रिजॉल्व किस तरह से कर रहे हैं. आप उनको बेचारा कह रहे हैं, या आप उनको उसका शिकार, और ओहो हमने वहां पे हाथ दिखा दिए, तो आप एक तरह से उसमें और भी ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं टू द ट्रॉमा रादर देन रिजॉल्विंग इट. Yeah, definitely. That's what we try to focus on. कि images matter a lot. I mean, हम जितना ज्यादा ट्रॉमा की images में हम यही देखते हैं कि वो ये तो हाथ दिखा रहे हैं, या आप आंसू दिखा रहे हैं, आप everything is like a Very disempowering. yeah, it's disempowering, and it's also again adding on to the trauma. But again, incest क्यों नहीं उस पर बात होती है? इसलिए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल क्यों नहीं आगे आ सकता? वही बात होती है ना कि घर का मामला है, ये घर के अंदर हो रहा है. इंसेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस से 2 कदम आगे जाता है, बिकॉज इसमें आपके बाप या भाई या मामू वो इन्वॉल्व है. अब अगर इसको आप सामने लेके आते हैं और वो सर्वाइवर जो है वो उस पर बात करना चाह रही है, आप पूरी फैमिली को एक्सपोज कर रहे हैं. वो फैमिली आपकी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज बाय पर्सनल एक्सपीरियंस जो 2-3 केसेस जिनको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है, all 3 girls were raped by the father. They had to leave the country, and the mother knew. अब मुझे आई थिंक कौसर का ही था कि we should talk about the role of the mother. मुझे नहीं समझ में आता कि हम इस पे क्या बात कर सकते हैं. उस औरत से किसी ने कभी बात की है, कभी उसकी थेरेपी हुई है, कभी उसकी स्टोरी सामने आई है, बिकॉज शी herself is been going through a trauma. It's not easy to see your child being raped by your husband or somebody within the family. तो ये बहुत एक उलझा हुआ मामला है, और इसको हमें नहीं, मुझे एटलीस्ट ये था कि इस पे हम ओपनली बात करें, और जितनी ज्यादा बात करेंगे तो शायद उतनी ज्यादा लोगों तक एटलीस्ट ये एहसास जाएगा कि सेंसिटिवली इस पे कैसे बात की जा सकती है. इसको आप एक सेक्सी चीज बना के ना लेके आए, इसको आप एक ग्लैमराइज्ड उस पे ना, बिकॉज रेप को भी हमने बड़ा ग्लैमराइज किया है अपने ड्रामा वगैरह में, अनफॉर्चुनेटली. सो हाउ डू वी देन deal with this very sensitive issue
where we can provide some kind of hope to the survivor? I mean, this is an open question to everybody in the panel. अच्छा, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरा आप लोगों से डिफरेंट है, बिकॉज आई वर्क विद स्कूल्स. जो आप कह रहे हो ना, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, और स्पेशली मदर्स. अभी मैं आपको लास्ट, मेरा थोड़ा गला खराब है, आई होप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं क्लोजली इसको लेकर अभी मैं 6 महीने में मैंने 3 केसेस को हैंडल किया है, एंड इट इज अ लार्ज नंबर. इट 50 या एक 100 के स्कूल में 3 केसेस होना बहुत अलार्मिंग है. और सड़क के आ रही हैं स्कूल में, एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द हेड टीचर and the staff. And I think I salute to the teachers who are identifying the cases, who is linking up where whatever resources they have it, they're trying to resolve it. मैं क्योंकि voluntarily after working with UNICEF for so long, I have a framework also कि इसको handle कैसे करना है. Trained as an educational psychologist, so मैं तो थोड़े लोगों को तो कर सकती हूँ, मगर let me थोड़ा सा टाइम आपसे ज्यादा ले लूंगी तो मे बी इसको बुरा ना मानिएगा, बिकॉज ये जब केसेस माँ तड़प के हेड टीचर के पास आती है, तो व्हाट डू आई डू? शी हैज मी देयर टू हेल्प देम आउट. तो हम उसको ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारते हैं. स्कूल को हमने कहना शुरू किया है कि इट शुड बी अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट. एवरीबडी, एवरी चाइल्ड हैज टू फील सेफ. सो हमें स्कूल को, टीचर्स को हमने एक लूप में लिया है, जिसमें एवरी चाइल्ड व्हेन दे कम टू स्कूल, बॉयज एंड गर्ल्स have to feel safe. यहाँ ये वाले स्कूल से आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वाइब्रेंट स्कूल है, और वो अपने बच्चों के मसाइल को हल कर रहा है. हम उसके ऊपर कवर नहीं डाल रहे हैं. देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस. बट वेयर इट कम्स टू द डिसेबल्ड चाइल्ड, या एक केस हुआ अभी 15 दिन पहले हुआ है. इट्स एन ऑटिस्टिक चाइल्ड. अच्छा, वो पहले स्कूल से भाग के वो निकल के गई है, नोबडी अंडरस्टूड. उन्होंने मुझे कॉल किया, व्हाट कैन वी डू, यू नो. एनीवे पुलिस तो पकड़ के तो ले आई, मगर अभी जो पता चला है कि उसके घर में उससे कंटिन्यूसली एक अब्यूज हो रहा था. मदर, फिर वो मदर को अब्यूज किया गया. शी केम, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाज स्कूल अगेन. अच्छा, वो बच्ची जो है, वो जो स्कूल से घर से भागी है, शी डिडंट हैव द लैंग्वेज. तो हाँ, ना लैंग्वेज थी ना एक्सप्रेशंस थे. I don't know for how long this child was abused, but अब उसकी माँ जो है वो ये चाहती है safety. She needs more dialogue with the family. She wants more dialogue from school to home. So हमें अपनी strategies को थोड़ा सा change करना पड़ेगा. I think people are coming up. They're not shying away, but they need a technical support. If we just make to glamorize, जैसे आप कह रहे हो rape को glamorize किए, फिर नहीं चलेगा काम. We have to have a right strategy for us. अब एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, बिकॉज मैं मेरा रहती, तस्नीम वुड अंडरस्टैंड एंड आसिया वुड नो, मेहराबादी इज इस्लामाबाद की सबसे बहुत बदनाम एक बात. जो कुछ इसमें कोविड में हुआ है ना, आई विटनेस्ड एंड आई डिडंट हैव द सॉल्यूशन. एनीवे, हमें अपने आप को थोड़ी डिफरेंट तरीके से देखना है. एक बच्चा जो रिपोर्ट कर रहा है, जो टीचर रिपोर्ट कर रही है, हेड टीचर रिपोर्ट कर रही है, where will she go? She can't reach to you guys. वो तो एक अपना बहुत क्लोज, जल्दी से उसको तो सोल्यूशन चाहिए है ना. अब तीसरा केस मैं आपको बताती हूँ. एक बच्ची है अर्ली ईयर्स में, she conduct an sexual act with other kids. तो उन्होंने मुझे कॉल किया. मैंने कहा देखो, पहले तो देख लो इसने सेक्सुअल एक्ट अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, या इट हैपन टू हर, और मे बी शी हैज द एलर्जी. सो 3 ऑप्शंस हमने देखे. 3 ऑप्शंस में से तो बाप ने पलट के फौरन कहा इट्स एन एलर्जी. सो अब वो डॉक्टर के पास लेके गया. डॉक्टर ने आगे से क्या किया, यू नो, दिस इज अ डायलॉग हैज स्टार्टेड. हम, आप सारी कहानियां जो कोट कर रहे हो 90s की एंड अर्ली 20s की, आई डील एवरी सिंगल डे. वो देयर इज नो सच बैरियर नाउ. लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, और वो कह रही है हाँ ये हमारा प्रॉब्लम है. हाउ डू आई डील विद इट, टेल मी. अब हमने एक टीम बनाई है जो 8 का लेकर आए हैं, इसमें बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है ये हु इज सफरिंग. सो बट दिस स्कूल हैज मी देयर, बट हाउ मेनी स्कूल्स कैन हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट? बट 100 बच्चा जब एक जगह होता है,
तो 100 में से 3 आ रहे हैं every month, which is a large number. That And is- I'll leave it here. If you have any, do you have any questions? Carry on. But I'm So working on my definitely, own. I'll get in touch with you, Khalda. Of course, to get more information about these cases, because we would like to do some stories on them, and keeping in view all the sensitivity and sensitization, we would like to take these issues forward. So definitely, thank you so much for being here in this space and contributing to the discussion. Thank you so much.